let's come to the page number one. Page number one, I find this quote a wonderful quote. If we all do the things which we are capable of doing, we would literally astound ourselves. We are capable of doing many things, many things, but sometimes we are not able to do it. Huh? Everyone has some capabilities. Everyone has some skills, but we are not able to do it. So that's why I put this quote in the beginning itself. Important note: if you are doing self-evaluation on answer writing, then I don't count it as answer writing. The reason being, when we write the answer ourselves and when we are doing the self-evaluation wala side, there is no point of doing that because ultimately we'll never get to know where we are lacking, what are the main challenges and what are the main issues we are facing. तो आंसर राइटिंग वाला साइड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. सेल्फ इवेल्युएशन इज आंसर राइटिंग. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने का, बट आई डोंट एज आंसर राइटिंग. Then second thing is, when it comes to the planning, whatever plan you make, how does your plan look? French Constitution, which has been enacted for the fifth time, 5 बार चेंज हो गया, हर बार वो नया बना लेते हैं. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन लिविंग डॉक्यूमेंट लाइक which can be amended for the improvement, but does not require to be enacted now and then. Idea is very simple. Whenever you plan, suppose you are planning for the July month, and you are making an overall plan for July, there has to be scope of improvement. Rigidity in plan creates a lot of issues, but the overall idea, the overall plan would not change. And generally it happens many a times with many candidates. What happens that today suppose you are making your plan for the July month. After 3 days you are changing the entire plan. After 3 days you are changing the entire task. So someone starts with that in the month of July, I'll finish optional paper 1, I'll write 3-4 essay, I'll write, let's say, do everyday answer writing, plus some full length test, let's say 2 GS per test. And today we are sitting on 10th of July and we are making this plan. On 13th of July, suddenly your plan changes. Optional paper 2. Then essay, instead of 3-4, you are like 7-8 essay लिख लूंगा या फिर 2 ही लिखूंगा. एवरीडे आंसर राइटिंग हो नहीं रही, तो इसकी जगह पे क्या आता है दिमाग में, या गो फॉर द सेक्शन टेस्ट में लिखनी है. फिर 2 फुल लेंथ जीएस की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 जीएस कर लिया. अचानक से कुछ भी चल रहा है दिमाग में, एनीथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड and you are like, I'll write 4 years without any thought, without any structure. Then on 17th of July, new plan, optional paper, essay, instead of 7-8, go back to 2-3. Then this sectional is gone. Now I'll write faculty. Does it happen or not? We keep on changing our plan. So we behave like a French constitution. We do not behave like Indian constitution. We do not change our overall plan. We do not. And why that issue comes, number one issue is we don't make a very good plan. And I call it workable plan. Workable plan हमारा होता है. Entire issue of your preparation starts with the faults in your plan. As simple as that. ठीक है. तो ये अगर चीज हो रही है, and if you have done that, then it is a big mistake. So number one issue is, lies in your planning itself, nowhere else. होता ही नहीं है. We keep on changing the task, we keep on changing the plan, and especially when it comes to GL.
Everyday answer writing, we switch to sectional test, then sectional to GS test. I call it escape mode. Why escape mode? Because we are not able to finish the things which we plan. तो वहाँ पे होता क्या है कि जो अच्छी चीजें होती है लाइक everyday answer writing, then going for sectional full length. That is the ideal way. But you are not doing this. So you are escaping to from sectional, you are escaping to faculties. This is a escape mode. And generally it happens. It happens many a times. ठीक है? Many a times it happens. Then what it takes to get the rank? Average talent. Everyone requires some talent is required beyond the number. And which you have because you have prepared the plans. अगर talent नहीं होता तो prelims clear नहीं हो सकता. इतना आसान नहीं है. Although those who are clearing the prelims every time they might say कि ठीक है ना सर prelims ही तो है. But prelims is the biggest elimination stage in civil service examination. ठीक. फिर workable plan we'll talk about the plan. Not Superman plan. Superman वाले plan क्या होते हैं ना कि things which you were not able to complete in the month of June, you are like I'll complete the entire thing in 10 days of July. Not do it. Workable होना चाहिए. अपनी हमें condition पता होगी. No nonsense attitude when it comes to execution. Balancing hard and soft will come to that. Constant review of your progress. That is very much required. Unless you review where you are heading, what you are doing. Sometimes we feel we are doing good. Sometimes we feel we are doing bad. But unless there is proper review, we don't know whether we are doing a good task or bad. Review बहुत जरूरी है. उसके बिना पता चलेगा. Sometimes you are having very bad feeling. कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, right? Like those who are in the mentorship batch one. ठीक है. Sometimes you are feeling कि नहीं यार पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. You just look back. कितना कुछ हुआ, कितने ऐसे हो गए. Around 4 ethics. We are done with it completely. Complete हो गया है. Ethics में कुछ बचा नहीं. We are done with GS1. That too in 5 days. No one can even imagine. 5 days content. अभी GS1 का इतना हो गया. Optional, you know what you have done. तो इतना सब हो गया है. If you check your peer group, नहीं हुआ लोगों का. ट्रस्ट भी नहीं हुआ. बहुत सारा हो गया. तो उसमें रिव्यू चाहिए. जब रिव्यू रहेगा ना तो वो पता चलेगा कि हाँ चीजें ठीक है. Then lastly in this you need 2 good slots of focused study for 2 hours a day. This is very important and very much required. Those who are part of batch one they know what focus session means and how we conduct and what is the benefit of that. In the focus session, I find that only 2 to 3 candidates nowadays are participating, and they are constantly participating. So now they can move from one slot to two. Now their time has come. Others who came, went. Again, you have to start with the one slot. ठीक है. फोकस्ड स्टडी बहुत जरूरी है. फोकस्ड स्टडी क्या करेगा? I have told you earlier also when we were making the big plan in the month of June. The solution does not lie in increasing the number of hours. Increasing of number of hours solution never lies in this. Solution lies in decreasing the number of hours and improving the productivity. And that productivity can only be increased with this. So we'll continue with that from tomorrow. And I'll tell you that how we are going to conduct. Okay? Then in the worksheet, you have to write down what are your 2 core strengths. Generally, what happens that we are when we are in down stage, we are like मेरा कोई strength नहीं है. Strength है ही नहीं मेरा. कोई सारी weakness है मेरे जीवन में. कोई strength बची हुई. और when we are moving ahead with some good progress, then you are like everything is my strength. I do not have any weak areas.
My point here is why I put it here, because I want to know what are your two core strengths. Everyone has some strength. किसी का ना मगअप करने में स्ट्रेंथ अच्छा है, किसी का सेटिंग अच्छा है, किसी का डायग्राम अच्छा है, ये सब अपना एप्टीट्यूड साइड पे आता है। देन किसी का ये अच्छा है कि दे कैन बैलेंस द थिंग्स, बैलेंसिंग अच्छा है, ये सॉफ्ट स्किल साइड पे आ जाएगा। वी विल टॉक अबाउट and why I want you to find out your two core strengths, because on those two core strengths, when you move and when you know that these are your core strengths, and when you move further with a positive mindset कि ठीक है मेरा ये core strength है, then you can make some progress. Generally we focus too much on the weakness. वीक एरियाज पे काम करना है बियॉन्ड एनी डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमें वीक एरियाज पे काम नहीं करना, बट at the same time we have to find out what are our strength, where our strength lies. बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेट रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जेटिक। ठीक है, दिस इज आइडियल क्वेश्चन, these two are ideal questions, but you can imagine the importance of these questions once you are in your natural flow. Once you are in your natural flow, in how many days you can finish what you plan? What you plan simply means finish the syllabus, do some answer writing, some test. But my main intention was syllabus. Once you are in natural flow, कितने दिन में syllabus खत्म कर दो? And those who have appeared in wings earlier, they know it very well that when wings is near, when there are like as I have been telling you ना since month of June कि अगस्त में सारी दुनिया पढ़ेगी, अगस्त में कोई भी बंदा मेंस दे रहा है except 10 15 candidates. Everyone study in the month of August, and generally everyone touch the entire syllabus. Generally, everyone try to touch the entire syllabus. They'll finish it. ऐसा होता है कि नहीं? Yes or no? You can message in the chat. And whenever I say message in that, then only a message, right? होता ही नहीं है। पिछले साल जिन लोगों ने मेंस दिया कि एक महीने में बैठ के विद इन 1 month इंटायर सिलेबस ऑफ ऑप्शनल था। अब वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, दैट्स सेकेंडरी। Entire syllabus of GS system, because you are working on the deadline wala sir, and you know mains is there. And during that time everyone reaches to this natural flow, ऑटोमेटिकली सेटिंग आर बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली ना बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है ऑटोमेटिकली। ऑफ कोर्स थोड़ा सीरियस कंडक्ट होगा वो तभी होगा, बट टुडे on 10th of July, if I'll ask you that if suppose once you are in your natural flow, in how many days you can finish what you plan? Generally, it takes around 40. 40 दिन में हो जाता है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। आई एम ओनली स्पीकिंग टू सिलेबस, नॉट आंसर राइटिंग फर्स्ट वाला पार्ट, दैट्स द सेकंडरी। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? होता है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, ये तो बता दो। आ रही है सर। ठीक है, ओके। देन imagine you are utilizing your full potential, you are working in your full capacity. How will this month of July go to be? Means everyone has a certain idea of himself or herself. Whenever we think about the future, whenever we plan in the future, we have a certain image of ourselves that I will be studying. Let us say that I will be studying 10 hours every day. That is my utilizing full potential, 10 to 12 hours in your full capacity without any kind of distractions. And it is an ideal condition. No one
can work without distraction. I'm just talking about ideal condition. So how will this month of July would be? Don't you think that it would be your best month in the entire preparation phase? Right? Okay. Right. Then, and why this question is here? Why this question is important, and why I put this question here? Because you have to try to reach somewhere to your potential. You have to try to work in a full capacity. Even if you are able to reach 50% of your potential, and 50%, I'm just saying 50%, it will be the best one for your entire preparation phase. Best means best, beyond that. And 50% we can achieve. Beyond that, some more capabilities are required. But 50 is good to clear the exam. Okay? इसके लिए we have to try and we have to plan कि what kind of actions are required in this side. Then this part A reflection. We are reflecting back. Reflection simply means reflecting back what we have done. So I have started with this question. What have you done to clear the prelims? Generally, we don't treat prelims as a success wala side, na? But if you reflect back and if you see what have you done to clear the prelims, your number of sitting hours 2 months before prelims, I would say generally 7 to 8 hours. How you used to plan your day, that it differs from everyone to everyone. Every day practice of questions. Did you do it? PYQ. Did you do it? Did you make some notes? Number of revisions. 2 revision, 3 revision. सबने प्रीलिम्स क्लियर किया है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आसान काम था प्रीलिम्स क्लियर करना. ऐसा होता नहीं कि आराम से निकल गया. कुछ तो एफर्ट मारा ही है ना. अब वो जो एफर्ट है वी हैव टू रिफ्लेक्ट बैक कि व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट we did, and the same effort is required here. Same effort which you did 2 months before prelims, the same effort, but in a different style, of course, because there you were practicing objective questions. Here we are dealing with subjective questions. But एक बार इसको reflect करना है कि prelims निकालने के लिए क्या मैंने किया, and those who are writing mains for the first time and those who have cleared the prelims for the first time, they know it. It was worth trying. वो प्रोसेस थी वो. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन क्या आता है कि आर यू एबल टू रिप्लिकेट द सेम इन द मेंस प्रिपरेशन. जनरली those whose preparation is not going good, generally you will find your sitting hours are less. Haphazard plan, everyday practice, I don't know, it depends. कोई कर रहा है क्या, PYQs का क्या हाल रहता है सभी को पता है. नोट्स बने हैं कि नहीं, we don't know. कुछ बने होंगे कुछ नहीं बने होंगे. नोट्स पे there is different section. Then honestly you have to write about your achievement and failure in the month of what you have achieved and what you have failed to do so. बस 1 2 3. अब यहाँ पे ना ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है. यहाँ पे ऐसे मत लिखना चालू कर देना कि अचीवमेंट में कोई आया कि आई डिड मॉडर्न हिस्ट्री एंड उसमें ही पता चला पूरा का पूरा पैराग्राफ चले. और फेलियर में भी ऐसे नहीं लिखना है. फेलियर में भी ऐसे नहीं लिखना, पॉइंट वाइज लिखना है. 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिखना ही नहीं. देन गेम ऑफ हार्ड स्किल. हार्ड स्किल सिंपली मीन्स स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द एप्टीट्यूड वाला साइड. एप्टीट्यूड वाला साइड क्या होता है, फिनिशिंग द कंटेंट. एप्टीट्यूड वाला साइड क्या होता है, मेकिंग द नोट. एप्टीट्यूड वाला साइड क्या रहता है, एवरीडे आंसर राइटिंग और फुल एंड टेस्ट और प्रीवियस के क्वेश्चन. ठीक. देन इन द जून whatever you have planned, मैंने ये प्लान किया था फॉर द फिलोसफिकल ऐसे. आई हैव प्लान फॉर द जनरल स्टडीज फॉर पेपर 1 पेपर 2 GS1 GS2 GS3 GS4. एवरीवन प्लान्स. प्लानिंग का काम सारे लोग करते. देन टारगेट अचीव टिल 10th of July. बी ऑनेस्ट. फिलोसफिकल ऐसे अगर लिखा है ना तो यहाँ पे लिखना कि इफ यू हैव अटेम्प्टेड फिलोसफिकल ऐसे देन यू हैव टू राइट द नंबर. हाउ मेनी, 1 or 2.
somewhere you might have worked in the content, then you can say yes, I have worked in the content. ऐसे का notes बनाया philosophical, पता नहीं, cross कर दें. Same goes for general study वाला essay. Have you prepared the content separately for the essay? Yes or no? Notes? Yes or no? कोई भी essay लिखा? Yes or no? Number. PYQ का mainly we do analysis. Analysis किया है और कुछ questions हम practice कर सकते हैं. Then you have to make the remark or rating. You have to rate. What should be my rating for the essay? Out of 10, you have to rate. And किसी ने अगर कुछ भी नहीं किया तो 0 जाएगा. And be honest, कि नहीं किया. The same goes for paper 1. अब यहाँ पे ना थोड़ा टॉपिक में जाना पड़ेगा. In depth you have to go. Notes वाला side. Everyday answer writing. Previous year question. Then you have to. Then GS2. Then GS1, GS2, GS3, GS2. Ultimately this rating you have to make. You have to tick mark. ये किया है, ये नहीं किया है, ये नहीं किया है, ये किया है. Right? Again I'm repeating. Everyday answer writing or FLD. If you are doing self evaluation, ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन अगर कर रहे हो आंसर राइटिंग में और PYQ में, इसको कर देना 0. गलती से भी लिखना ही मत कि आई हैव डन. Without evaluation, I do not count answer writing in optional essay GS as answer writing. Then how do you spend your day? Mention only about last week. अब यहाँ पे ना जून से स्टार्ट नहीं कर, ठीक है. Only last week and general idea you have to mention कि how do you spend your day every day. Suppose you are sitting for 10 hours. Generally, how do you spend it? Is it full of distraction or properly planned? Are you able to start studying in the first hour itself? I'll talk about the importance of first hour. What is the length of your one slot? One slot means the time we devote. The time we devote for our slot. Like as I have described, the total 3 to 4 slots has to be there. So what is the length of your one slot? It can be 2 hours. It can be 3 hours. It depends. Are you happy with the pace of your preparation? Again, we have to rate it. Let's say out of 10. कितना हम rate करना है? Then how would you like to spend your day? It simply means we have an imagination and we imagine ourselves. I would like to spend my day like this. Less distraction, more focused study, doing answer writing, or making some notes. Anything which you have, like some ideal thing in your mind. Everyone has clear idea about it. So in this table, what you can say is when I wake up, what I do in the first hour. Within first hour, if you are not start studying, within first hour, if you are not doing it, then trust me, you are wasting your precious hour. Because within first hour, we have highest energy. Generally, we have highest energy. And then after waking up, let's say you are wake up at 7. So from 8, are you starting your day? What is the length of your slot? 2 or 3 hours. Then remark. Then expected rating. You are expecting yes, I will be able to achieve this. Same you have to do for afternoon, evening, and sleep time. We have an ideal scenario in mind. I'll wake up at 7, I'll sleep by 12. Someone is going to sleep by 12, sleeping at 3, waking up at 9. Be honest. Mention. Then in afternoon, suppose you are starting your afternoon from 1 p.m. What you are going within first hour. Why I put it? Within first hour, some do not start their day. They do not start their day. They take their time, 2 hours, 3 hours, 4 hours, starting the day. Biggest mistake. Second thing is how you are spending your first hour. Are you planning your day within the first hour? Today I will do this. Task 1, task 2, task 3, task 4. And then you find yourself that you're not able to start your day. At the same time, you're not able to do the things which you have planned. Right? So this you have to do.
Then what are your biggest mistakes? Number one mistake can be wasted time in notes making. Notes making, suppose someone started making notes of art and culture. Person took 5 to 6 days, and even then the person is not satisfied. No one gets satisfied. So this can be a bigger mistake. We do not spend 5 to 6 days for making notes of art and culture. Those who are in batch one and all, 5 days में तो हमने पूरा GS1 खत्म कर दिया था. होता है कि नहीं है, जब नोट्स बनाने बैठ गए, होता है ना कि एक बार बनाने बैठ गए तो बनाऊंगा ही, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए. यस और नो, है ना? एंड देन यू आर जस्ट डूइंग दिस एंड यू आर फीलिंग कि आई एम स्टडिंग. एक ना वो फेक सेटिस्फेक्शन तो आता ही है, आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब. ये कर रहे हो, वेस्ट टाइम इन मेकिंग प्लान एंड नॉट एबल टू एग्जीक्यूट एवरीडे प्लानिंग वाला जो पता है. यू वेक अप इन द मॉर्निंग कि आज का दिन तो ये कर देंगे वो कर देंगे, nothing is happening. I just gave 2 examples. So what are your biggest mistake in the month of June? What is stopping you to not repeat the same? Sometimes we keep on repeating the same mistake which we have committed. So what are those things? Then where are you distracted? This thing is very important. Distraction. Where are you distracted? Generally, when we enter into the preparation phase, everyone goes through this thing called OCD, obsessive compulsive disorder. It's not disorder. I would say OCD, not OCD, obsessive compulsive thoughts. Some thoughts keep on ringing in your head, keep on ringing. Suppose someone knows that once I open YouTube, I spend 3 hours, 4 hours on YouTube. You know very well that you are wasting your time. You know very well it is the biggest distraction for you. Despite of that, you keep on doing that. You are, let's say, you are there in some of the groups on Telegram groups. तुमको पता है कि वहां जो बातें चल रही है कोई काम की नहीं करती है. Just to do the time pass, you are there. You just opened your Telegram, you saw some conversation going on, and either you become the part of the conversation or passively you are following the conversation, and you don't even know कि where your 2 or 3 hours are going. होता है कि नहीं? तो अपने distractions को देखो कहाँ पे है. Everyone gets distracted. Don't feel ashamed about it, but we have to see कि हम distract हो कहाँ पे. कई बार ना पता ही नहीं होता. वो फिर हमें समझ में नहीं आता. ठीक है. Then you have to rate your month of June out of 10. Poor 1 to 2, average 3 to 4, good 5 to 6, very good 7 to 8, highly productive 9 to 10. They have, if someone is saying 9 to 10, you have achieved enlightenment. No need to prepare for civil services exam. It is a very small thing for you. ठीक है. Enlightenment मिल गया है तुम्हें, जाओ कुछ और कर लो. Honest rating कर लेना. कुछ लोगों के साथ में दिक्कत क्या होती है ना, some people have wrong attitude. Some people have wrong attitude, and because of the wrong attitude, suppose they are on average. So they are like, no, 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 I'm not average. They will never accept that they are average. They'll say, no, sir, I'm good. No, sir, I'm very good. I'm very good. This is wrong attitude. सुनेंगे ही नहीं किसी की. सुनोगे नहीं तो पछताओगे. So one type of wrong attitude, overestimation. Then exists another type of wrong attitude, underestimation. Underestimation क्या होता है? You are good. You are like, no, 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 I'm not good. I'm average. You are average. You are like, no, 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 sir, I'm not average. I am तो बिल्कुल poor. This is also a wrong attitude. Be honest in this assessment. Then coming to the action plan. To come back to the productive preparation phase, all you need is one short-term success. There are two kind of success. One is short-term.
सेकंड इज लॉन्ग टर्म। कई बार क्या होता है ना, हमारी एनर्जी लो रहती है, कई बार क्या होता है ना कि हमारे दिन ऐसे ही निकलते रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। एज आई हैव पोस्टेड दैट पोस्ट ना, फ्लीडिंग वाला, वो फ्लीडिंग वाला साइकिल में हर कोई आता है, हर कोई आता है। वहां से बाहर कैसे निकले? यू नीड इमीडिएट शॉर्ट टर्म सक्सेस। और ये शॉर्ट टर्म सक्सेस जो होती है ना, ये हमें फ्यूल दे देती है, ये हमें एनर्जी दे देती है टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड। तो वो शॉर्ट टर्म सक्सेस के देर आर टू वेज। नंबर वन, एज आई हैव सेड, it has to be mixed of one simple task and one tough one. Generally I prefer tough one, but as you are in that down phase, if you are बिल्कुल डाउन पेज चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा टास्क ले लेते हैं, which is easy to do, which we can do, which you know कि you can do it. लेट्स से कि ऑप्शनल का कोई सिंपल सा टॉपिक है, उसको पढ़ लिया। लेट्स से कि जीएस, जीएस 2 में पॉलिटी लक्ष्मीकांत उठा लिया, लक्ष्मीकांत पे पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया। नॉट ए टफ टास्क, नॉट ए टफ टास्क ना, कोई टफ काम तो है नहीं यहाँ पे। एंड ये सिंपल टास्क हो गया। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, वन टफ टास्क भी हाथ। ये हमें क्या करेगा ना, ये सिंपल टास्क का काम होता है कंसिस्टेंसी पे, विच इज नॉट देयर इन अवर एफर्ट। जनरली व्हेन वी फेस दिस डाउन फेज ना, तो वो कंसिस्टेंसी के लिए वी नीड इट, एंड वी नीड इट इमीडिएटली। तो ये वाला काम हमारे साथ में ये कर देता है, सिंपल वाला टास्क कंसिस्टेंसी हमें देता है। टफ टास्क जो होता है ना, ये हमें सर्व कर, ये हमें देता है सेल्फ पर। ये हमारा कॉन्फिडेंस रिगेन करने में बड़ी हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। टफ टास्क कैन बी राइटिंग एस, once you write an essay, you'll definitely feel good. उसको मत चेक करो फिलहाल, इवैल्यूएशन का भी जरूरत नहीं, यू विल डेफिनेटली फील गुड, हियर आई हैव डन विद वन एसे। एथिक्स का कोई भी सेक्शनल टेस्ट लिख दिया, थियरी और केस स्टडी वाला, ऑप्शनल का कोई भी सेक्शनल टेस्ट लिख दिया, कुछ भी, एनीथिंग विच चैलेंजेस यू। सिंपल टास्क, again I'm repeating, simple task will give you consistency which is required. Tough task will give you self-worth which is required. You will regain your lost confidence. So it has to be mix of it. ठीक है? Then multiple course of action are there. Planning phase. Planning phase में जनरली क्या होता है? As I keep on saying this, problem planning phase में ही रहता है, execution में बहुत issue रहता है. And majority of the people think only in terms of execution. That they only think कि मेरा execution का issue है, planning में तो मैं best हूँ. As if you are the best in the plan. Issue starts with the planning itself. First thing, make a realistic plan. If you are studying only for 5 hours, then your next plan should be based on your 5 hours. हम क्या करते हैं लेकिन, अभी तो 5 घंटे तो पढ़ाई हो नहीं रही है। सपोज 10 जुलाई को 5 घंटे तो पढ़ाई हो नहीं रही, लेकिन 11 जुलाई को जो मेरा प्लान बन रहा है, उसमें मेरे प्लान में कितने घंटे जा रहे हैं? 12 आवर्स। आई एम एमिंग फॉर द 12 आवर्स। वाई? Some supernatural power will enter in you? No, it cannot happen. वो one day it might happen कि हाँ कल 12 घंटे पढ़ ले, but our main aim is to maintain the consistency. ये हमारा मेन है। So on 10th of July you are studying for 5 hours. So for 11th to 14th your plan has to consider that I am able to study only 5 hours. So my plan, in my planning, it has to be there that I will study only for 5 hours. If it increases, very good. If it does not increase, then also there is no problem with it. ठीक है, ये हमें काम करना ही नहीं है कि सपोज एक इन 1 hour अंडर हरिकेन बैच
7 क्वेश्चन तो लिखे नहीं जा रहे हैं इन 1 hour अंडर हरिकेन में, 7 क्वेश्चन तो लिखे नहीं जा रहे हैं. But on 11th July, you are aiming in 3 hours, I'll write 20 questions. Unrealistic plan. Unrealistic. It has to be realistic. Then have some breathing space in the plan. What is the problem with that? हम लोग जब प्लान बनाते हैं हम क्या करते हैं? 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 7 days का प्लान बना लिया. अभी बैठे प्लान बनाते हो, 7 days का प्लान बना लिया. इस दिन ये कर लेंगे, 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 ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे. ठीक है यार. There is no breathing space. Suppose if there is no breathing space, what is the problem? Main problem comes that if on 11th you are not able to finish some task, then it will carry forward in 12th. In some task you will not able to finish of 12th, 13th आते आते ऐसा हो जाएगा ना कि 3 दिन का ही टास्क 14th पे लोड हो जाएगा. और जब 14th पे लोड हो जाएगा ना तो 14th का टास्क फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा. So ideal way of planning is Monday to Friday. That is the best. Monday to Friday plan. Saturday breathing space. If by any chance I will not be able to finish things which are there in Monday to Friday wala side, I'll finish it on Saturday. I have that breathing space. Then you will not rush. कभी कभी क्या है ना कि जस्ट टू इंश्योर कि चीजें खत्म हो जाएं, हम फॉर्मेलिटी भी कर देते हैं. फॉर्मेलिटी करते हैं कि नहीं कभी कभार, वो हम फॉर्मेलिटी भी कर लेते हैं, तो वो फॉर्मेलिटी नहीं करनी. मंडे टू फ्राइडे का प्लान बनाएंगे, सैटरडे एक ब्रीदिंग स्पेस रखेंगे, संडे ब्रेक. ब्रेक सिंपली मीन्स ब्रेक. हाँ, ब्रेक का अभी मीन्स आया है. ब्रेक का ये मतलब नहीं मूवी देखने चले जाओ, ठीक है. ब्रेक का मतलब है कि उस दिन कुछ और कर लेंगे, समथिंग प्रोडक्टिव. बट हाँ, हम ये माइंड में लेके चलेंगे कि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन नॉट वर्क 24/7. संडे का एक ब्रेक वाला दिन है, पढ़ने का मन करेगा पढ़ लेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे कोई लोड नहीं. बट सैटरडे का ब्रीदिंग स्पेस बहुत जरूरी है. और ज्यादा टाइट प्लानिंग जो होती है ना, प्लान बनाते वक्त ही बस वो अच्छा लगा करता है. टाइट प्लानिंग में होता है क्या है ना, प्लान बनाते वक्त तो वो लगता है कि रैंक 1 का मैंने प्लान बना दिया भैया. एग्जीक्यूशन हो नहीं पाता यार उसमें. होता ही नहीं. होता ही नहीं. ठीक है. देन इन योर प्लानिंग ब्रेक प्लान इनटू स्मॉलर पार्ट्स. लॉन्ग टर्म प्लान बन जाएगा. विल डू इट कि 15th of September तक मेंस चालू है. हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. ब्रेक इट इनटू मंथली, break it into weekly, break it into daily. Weekly means Monday to Friday. I'll come to that when we'll see the sheet. Then again this I'll come to that when we'll see the sheet. Once you are done with fixing your time for a certain task, after that make sure that you adhere to that as when we conduct focus session. ये चीज मैं कितने टाइम से सभी को कह रहा हूँ. I don't even remember that how many times I have told you this concept, and this concept is for the productivity. High productivity, not normal productivity. Same task, same time. मेरे से ना ये बात कितनी बार दोबारा सुन लोगे और कितनी बार सुना हुआ है. सेम टास्क सेम टाइम, सेम टास्क सेम टाइम. I keep on repeating this one concept, and I don't know how many are following it. I really don't know. But it is very important for the productivity. It cannot be the case that tomorrow morning, 8 a.m., you start with your option. 11 July, 12 July, एथिक्स से चालू कर दिया. 13 जुलाई ऐसे से चालू कर दिया. नहीं होगा यार, प्रोडक्टिविटी आएगी. सेम टास्क सेम टाइम. फिक्स इट. Simply fix. Only then you can achieve some high level of productivity. Outsourcing. Very, very important concept. Outsourcing as you are part of SOMP. So most of the things I believe
आर बीइंग आउटसोर्स। नोट्स वाला भी आउटसोर्स है, पीवाईक्यू भी तुम्हारा आउटसोर्स है। तरुण सर विल टेक द सेशन। प्रोफेशनल हेल्प किसी भी जगह पे चाहिए इन एसएन जीएस, इट इज देयर विद यू। ऑप्शनल वाला साइड पे आई कैन सी, ऑप्शनल वाला साइड पे इफ यू बिलीव यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। अब देखो नोट्स में दिक्कत क्या होती है ना, कि नोट्स में दिक्कत क्या आती है ना, कि जनरली लाइक आई हैव सेड ना, वी मेक नोट्स फॉर अवरसेल्फ नॉट फॉर अदर। फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाते, बाद में बनाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बनाते हैं, हर टॉपिक के नहीं बनाते। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सारे के सारे टॉपिक के नोट्स बनाते हैं कि वी डू नॉट मेक नोट्स फॉर द ऑल द टॉपिक्स, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैज टू बी देयर। प्रीलिम्स में सारे के सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे क्या? नहीं ना। फिर वो चेक करना है कितना टाइम हमने लगा दिया नोट्स बनाने में। या तो हमें नोट्स बनाना आता ही नहीं है। ऑन द नोट्स मेकिंग देयर विल बी सेपरेट स्पेशल सेशंस स्पेशली ऑन द नोट्स मेकिंग, हाउ टू मेक द नोट्स। नोट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि दोज नोट्स यू आर गोइंग टू कैरी विद यू इन नोट्स। ठीक है, तो वो वाला साइड। देन पीवाईक्यू वाला साइड ऐसा है कि सेल्फ एनालिसिस सेल्फ प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है। प्रोफेशनल यहाँ पे चीज चाहिए, सो तरुण करके सेशन होते हैं एंड दोज हु आर बैक नो, आई नो यू डोंट मिस हिज सेशंस एट एनी कॉस्ट। टेक्नोलॉजी वाला साइड है, टेक्नोलॉजी वाला साइड पे ना बेन एंड बून। टेक्नोलॉजी वाला साइड पे स्पेशली नोट्स वाला जो साइड है, डिजिटल नोट्स मेकिंग, लाइक इवन आई नॉट वॉज इवन आई एम अ पर्सन ऑफ ओल्ड स्कूल, किताब वाला पेपर पेन वाला। But now I have started this and I feel it is more convenient, it is more helpful than the paper pen wala side. So technology wala part, we'll see how we are going to use it. Execution phase, same task, same time. I have clearly mentioned it. If you do it, you can find higher level of productivity. Focus sessions. Those who are new, they don't know about it. I'll tell you what is that. I will tell you what is that and how you can utilize this particular facility. So focus simply means that in a given day, you start with 2 hours. On that 2 hours, I'll finish XYZ task. Let's say optional. Optional का certain topic source. So what SMP does now, SMP conduct Zoom session. So in that Zoom session, you have fixed agenda in your mind कि 2 hours के लिए जाना है, ये ऑप्शनल का है, ये टॉपिक है, ये सोर्स है, यही करना है। वो 2 आवर में कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए नहीं। कैन वी सिट ओनली फॉर 2 आवर्स? आई थिंक वी कैन, फुल्ली फोकस्ड एंड लॉस्ट इन अवर वर्क। द डे यू विल स्टार्ट, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा विद इन 3 to 4 days, बट दोज विल कंटिन्यू फॉर मोर देन 10 days, दे फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। And again, I will repeat, increasing the number of hours is not the solution. Solution lies in decreasing the number of hours, becoming more productive. कितने घंटे पढ़ा लोगे यार? 16 घंटे पढ़ लो, 18 पढ़ लो, 20 पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ना चालू कर दो, बहुत जल्दी आईसीयू में पहुंच जाओ। इवन 16-17 पे भी पहुंच जाओ। वो सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन इज लाइंग इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ आवर एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। ठीक है। डेडलाइंस, deadlines are very important part of execution. If you do not have a deadline in mind, then execution हमेशा late होगा। Like yesterday, this batch one, they wrote ethics full and test. Before the test, एक cute सा thought आता है। Before the test, एक cute सा thought आता है कि यार अभी ना कंटेंट मेरा तैयार है, थोड़ा सा बस और तैयार कर दो, थोड़ा सा बस मैं और रिवाइज। Some more content should be there, more revision should be there. Then I'll write the best test. Then क्या होगा? एथिक्स का टेस्ट कब प्लान था? How much time you require? Let us say 1 week. Then on 15, you will feel बस थोड़ा सा और कर, बस थोड़ा सा और कर। ये कहाँ चला जाएगा? 22, फिर कहाँ जाएगा? 29। Not adhering to deadline leads to frustration.
यही सबसे बड़ा कारण है फ्रस्ट्रेशन का, और कोई कारण ही नहीं है। जिन लोगों ने कल 9th को टेस्ट दिया है, जिन लोगों ने कल 9th को टेस्ट दिया है फुल एंड टेस्ट, आफ्टर डूइंग एवरीडे आंसर राइटिंग एंड अदर थिंग्स, डोंट यू थिंक कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट आई एम डन विद द टेस्ट। वी कैन डिबेट ऑन द क्वालिटी, कि क्वालिटी कैसा था, बट एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो है ना, है ना। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो है कि यार हमने ये कर लिया है, राइट। तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए। और वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कब आएगा? जब हम लोग डेडलाइंस मिस नहीं करेंगे, हम कट ऑफ डेट मिस नहीं करेंगे। हम करते हैं मिस, कभी कभार चलता है यार, कुछ ना कुछ हो जाता है। बट अगर संडे को एथिक्स लिखना है तो लिखना है, ऑप्शनल का पीवाई क्यू करना है तो कर, ऐसे लिखना है। ये करते जाओ जाओ, सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। सेटिस्फेक्शन जब मिलता जाएगा तो हम एक उस लेवल पे आ जाएंगे ना कि जहाँ पे चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, और चीजें उस लेवल की बेहतर हो जाएंगी कि अंदर से लगेगा अब चीजें बेटर हैं और चीजें कंप्लीट होना चालू हो। ठीक है, चीजें सब कंप्लीट होना चाहिए then in the month of August, where others will be having lot of agenda, lot of things, इतना सारा टारगेट, इतनी सारी चीजें, ये सारी चीजें कहाँ पे जाएंगी? एथिक्स का टेस्ट नहीं लिखा, GS1 का टेस्ट नहीं लिखा, ऑप्शनल का कुछ नहीं है, ऐसे का कुछ नहीं है, कहाँ पे जाएंगी? अगस्त, अगस्त का महीना इतना सारा लोड संभाल लेगा? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। डेडलाइन अगस्त में हमें रिलैक्स है। रिलैक्स ऐसा नहीं है कि चिल मारना, अननेसरी, राइट। देन इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग एफर्ट, दैट कंपाउंड इफेक्ट वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा। Ethics compound. Accountability is definitely important. If you're not accountable to anyone else, and if someone is not accountable to you, then there's no point. फिर तो वही है ना कि जेम्स एंड पैंसी पे हम काम करते रहेंगे कि आज नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आज नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी ऐसे इंसान के साथ में चाहिए कि हम किसी की तरफ देख रहे हो, वी लुक टुवर्ड्स समवन, यार इसके साथ में मुझे अकाउंटेबिलिटी करना है, तो इट कैन बी समवन एल्स, इट कैन बी अ, but fixing accountability is very much important. Then this last sheet, monthly, weekly, and daily report. Agenda for July. That sheet I have shared now, which one candidate made. पूरा syllabus beautifully he has made that. That you should do it. वो easily बन जाता है। ठीक है, agenda for July month pointers 1 2 3. Agenda for this week. Now this entire thing has to be broken into this week plus. इन दिस वीक ये टारगेट है, एंड यू हैव योर मेंटर विद यू, तो मेंटर के साथ में डिस्कस करेंगे इस वीक का क्या टारगेट। देन डेली टारगेट, अब डेली टारगेट वाला जो होगा, अब वीकली टारगेट हमने फिक्स कर दिया, टुडे वी आर सिटिंग ऑन 10th ऑफ जुलाई। अब लेट्स से कि 15th ऑफ जुलाई तक बनाना है ना। तो अब ये नहीं करना है कि आज ही बैठ के ये डेली का प्लान बना, दैट यू स्टार्ट फिलिंग दिस शीट टुडे। नो, यू शुड नॉट। what you are supposed to do, so the 10th of July you are supposed to make the plan on 9th of July. Fixed subject, fixed topic, fixed source. Once you are done with these things, something will be left for sure, and some things you will achieve. So what is left? Whenever you are going to make plan for the next one, you can add those things in that sheet. इन दिस वे इफ यू मूव, तब तो ये ठीक रहेगा। लोग क्या करते हैं ना कि अरे वाह ये शीट तो बहुत ही अच्छी है, इसको आज ही फिल कर देता हूँ, and they start feeling 11th को I will be doing it, 12th को I will be doing it, 13th को I will be doing it, 14th को I will be doing it. There's a very good possibility that on 12th you may not be able to study. फिर क्या होगा? वही 12 13 बन जाएगा, 13 14 बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ये नहीं करना, बिफोर नाइट यू हैव टू फिल, राइट। एक रात पहले फिल करेंगे, देखेंगे कुछ इमरजेंसी भी आ